Sounds good. Okay. So what we will do is we will work on the forms on React today. And this will give you a clear idea of how the forms also work and how the events work. So that way it will give you a clear idea of the complete thing and how we can use both class-based as well as functional-based components. Okay. No, Sakshi, it should correct whatever Rajkamal has said. It should, obviously, if you click on plus, it should increase. If I click on minus, it should decrease. And if I click on the center one, it should refresh the whole count. It's still tomorrow, guys. So you still have one more day. I cannot increase the deadline. Sorry. Okay, so let me share the screen. And before 1 second, before that, I'll just close a couple of things. All right. So I hope you guys can see it. And we have built up so many things. There was HTML in between this as well. And we were working on the app.js. We kind of created a delete card functionality, and we talked about the filter function and how did it filter out, and we used the set state property. Can anyone tell me why do we use the set state? Why can't we directly change the state? What is the disadvantage of directly changing the state? Anyone knows why? Okay, Bikram, correct. And what could be that rendering problem? So let's do this. एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं. Instead of set state use करने के, whatever Bikram is saying, we will try to replicate that. And I will say this dot state dot pizza place is equal to pizza places, right? जो हमने ऊपर यहाँ पे ये pizza places लिया है, उसका access मिल जाएगा, right? Correct? So अब देखते हैं होता क्या है. उसको देखने के लिए we will start the server and run npm start. I hope I have all my node modules. Yes. So by the time I change this, it starts. Let's just quickly open the local host. Still starting the server. But I said this is not the right way of doing it. And the reason is that we don't want to change the initial thing. Now, if you will go ahead and understand your JavaScript a little bit more in detail, you would have seen something like dot push on an array. So if I have an array and if I use dot push and I pass an element, right? 23, let's say. What will this do? What does push do? Before I go into this, you know what push does on an array? Add at the last, correct. Utkarsh, your question means you do not understand React well. लाइव सर्वर हम लोग कब यूज करते थे? जब हमें कोई सर्वर पे कोड चेंज करना था. अब हम वो पूरा सर्वर ये npm start से बना रहे हैं, तो लाइव सर्वर की जरूरत नहीं हमें. npm start से हमारा सर्वर स्टार्ट होता है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू चेंज द ओरिजिनल एरे. तो जो ओरिजिनल एम्प्टी एरे था उसको चेंज करके उसमें ये 23 ऐड कर देगा, right? When I mean that this function is going to change, or this method is going to change the original array, and this is what we are doing over here.
जो initial state था this dot state dot pizza places, that we are replacing with the new that we are changing to this. We are saying okay, now that is equal to this one, and let's see what happens. So I'll share the screen. So this was our application at that moment. So if I delete this, see what happens. Let me go ahead and check the state, and we can check the state using the plugin that we had, right? You guys remember the plugin? Did you install the plugins? Okay, so we'll go to the component section, and inside the pizza, or I'll go to the app because this holds my pizza places ka array. As you can see, I have pressed these two delete cards, haven't I? Right? I have pressed these two delete cards. Let me press again. I will press oven bricks here. The entries are kind of, let me press app again, go to this. It is still receiving all this, right? It is still receiving all this. And if I go into my apps, now it has reduced to 2 state. Can you see this difference? Can you see this difference? What is happening? It is receiving, जो initially data इसको मिला था इस functional component को, it is still there, even though I delete this. तो delete से हमने क्या किया? हमने connect किया है अपने app.js पे, वहां पे जाके वो state भी update हो रहा है, but re-render नहीं हो रहा है. Do you understand? It is not re-rendering, and therefore if it is not re-rendering, that means that the new data is not being sent to the child component of pizza, and that's why that new data is not getting reflected. Make sense? Yes, no, maybe. Okay. Set states also increases the optimization and performance. Yes, very correct, Bikram. So at the moment, it also tells me in my application that use set state, because this is a very illegal way of doing it, if I can say that. This is a very illegal way of handling a state. Why? Because this is modifying the existing values. And set state has this capability. So this will have rendering problem. And this is how we set the state. And once we set the state, what we are doing is, once the set state is triggered in any component, what it does is the value of the state, whichever we are trying to update over here, gets reset. ठीक है, ये तो अपने ओरिजिनल डेटा दिया है, तो अब जब भी हम सर्वर स्टार्ट करेंगे, it will start from here. But while we are working on the server, what we are doing is we are saying that, okay, if someone clicks, update this with the new value by filtering out the stuff. And we did filter it out. And the new value, I want to set it as set state. I do not want to replace the old values. And that's what happens. And then it sends the value to this one, pizza component, where it receives that data as an array over here through which we map. And whenever we use map, what we do is we use this key elements, right? And these key elements are going to be creating a multiple JSX, which we store in an array like this. And that is what we are returning from this particular component. Getting the whole stuff? So this is why we use set state. Now let's say I also want a functionality to add stuff from my page. What I want to do right now is, now it is going to work fine. So if I click on delete, it is going to work fine. Everything will be deleted. If I refresh again, it is going to get updated. But एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, but if anyone has a solution, do let me know. मेरे को क्या चाहिए, जब मेरा सारा डिलीट हो जाता है from pizza,
what I want is I want this particular thing to be triggered and it is not triggering. Can you tell me the reason? मेरे को क्या चाहिए? नो डेटा अवेलेबल जब हम लोग सब चीज डिलीट कर देते हैं, और वो कब होगा? कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दैट? Any solution? It's a logical thing. It's a logical thing. What condition, Shivansh? यहीं पे इसी कोड पर है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं हमें प्रॉप्स मिल रहा है नया नया, और वो नया नया प्रॉप्स मैप कर रहा है बार बार। जैसे ही लास्ट वाला भी डिलीट करते हैं तो उसको नया प्रॉप मिलता है। इफ नल, तो वो तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली ना कि props डॉट पिज्जा नल तो कभी होगा ही नहीं, मतलब ये एरे तो बचा ही रहेगा हमेशा के लिए। ये एरे के वैल्यूज खत्म हो जाएंगे बट ये एरे तो रहेगा, तो नल का मतलब क्या हुआ? अभी then we will have to set the value of pizza places to null, right? कैसे कर सकते हैं? So Bikram says when the state array becomes empty, second condition will be returned. But is it returning right now? Like, do we need to change something over here? We are. So basically, this is a return value. Remember, अगर मैं पिज्जा प्लेस हटा देता हूँ अभी के लिए and check out our output and refresh this, let it refresh. You see, no data available is returning. This is what you were saying, right, Vikram? But this is returning me the value, and it is getting triggered. And this is when I say that there is no pizza place. But हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? तो pizza place का values हटा रहे हैं यहाँ से. So how do I cater that? Conditional rendering. बहुत बेसिक सा चीज है. यहाँ पे लेंथ का चेक कर ले, क्या बोलते हो? What if we check length over here? Since pizza place is a array और उसका एक प्रॉपर्टी होता है डॉट लेंथ, अगर मैं ये कर दूं, क्या ये सॉल्व करेगा मेरा इशू? Will it solve the issue? What do you guys think? Let's go check it out. Let's delete, and no data available. It does. Are you able to get how we code? Like, how do we think while we are coding? Like, this was not related to React in general. It was not related to exactly to React, but it was more of a programming. Like, how do we think while we are doing it, while we are doing any kind of work? So what is happening is, हमारा basic bug था, बहुत छोटा bug था कि सारी चीजें डिलीट होने के बाद वो दिख नहीं रहा था मेरे को, ये चीज दिख नहीं रही थी. बट यहाँ पे हमने बस एक कंडीशन चेंज कर दी कि चलो लेंथ जब 0 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज रिटर्न करना है. क्योंकि इसके पहले जब हम रिटर्न कर रहे थे तो हमें एरे तो मिल ही रहा था, तो उसके हिसाब से एरे तो आ ही रहा है. लाइक देयर इज अ वैल्यू ऑफ props dot pizza places that is there, and that's why it was going inside this, and there was nothing that was rendered because the values were not there, right? So pizza place dot name was undefined, so it was kind of saying that okay, I have rendered it and I'm not going to show it because there is no value to be shown, right? Make sense? सबको समझ में आया क्या किया हमने? So यहाँ लेंथ लगा देंगे तो it will work according to what we are doing, and this will
like do not get bogged down that अरे मेरे को नहीं strike किया ये कैसे करेंगे. Don't do that. It's more of a practice. The more you practice, the better you will get at understanding code and how to handle situations. All right? Cool. ठीक है. तो ये सॉल्व हो गया हमारा ये इशू. अब मैंने क्या बोला था, वी वांट टू also have a functionality which will help me to create a form over here, and that form should be able to add the cards in this particular app. तो फ्लो क्या होगा, एक और कंपोनेंट बनाते हैं. ठीक है. So let's create a new component and I will call it, I'll create a new file and I will call it as add pizza.js, and this should go inside component. So what kind of component should I make this one? Should I make it a functional component or should I make it a class-based component? What's your input like? And why would it need state, Shivansh? Correct. To update the cards. Correct. And add more cards. ठीक है. So let's take Shivansh's advice and I will say React from React. And I also said I will require a component. तो अभी तक मैंने आप लोग को ये बताया नहीं है. This is destructuring basically, object destructuring. और हम लोग create करते हैं class and call this as the name of whatever the file I have given, and this extends what? A component, because I am creating a component. Okay. Now सबसे पहले render करते हैं because this is very important, and I'm going to return a very basic form structure. From here I'll go create a div, give it an ID of add pizza form, and इसके अंदर एक form create कर लेते हैं. Okay, now this one will have kind of a input box. Let's say type is equal to text. अब आप सोचो, इसका name रखते हैं whatever name we have suggested, and there will be an ID to this and there will be a placeholder to this. ठीक है. So what we are trying to do is we are trying to capture the input values, text values capture करेंगे, और based on this value I'm going to update my cards. So what do you think should we ID this as or name this as? थोड़ा सा consistent रहना है हमें. तो उसके लिए ये name है, तो इसको name दे सकते हैं, इसको description दे सकते हैं. Okay? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको name जो देंगे, name, and this will be name as well, and enter name, let's say. So since this is a JSX, I'm using a suggester. So what it does is it automatically closes it. You can use the single one also. And this is JSX, right? This is like, it looks like HTML, but this is JSX. Okay. अब दूसरा input type उसका text. Or let's create a text area. What do you say? Text area. Rows छोटा ही रखते हैं. WS 10 calls 10. अजीब सा दिखेगा. कॉलम अगर 20 कर दे तो थोड़ा सा बेटर रेक्टेंगुलर दिखेगा. Okay, and I will ID this as description. Placeholder
saying enter description. So ये दो चीजें हैं, dot dot dot, this creates a text area, और एक input button रखते हैं which is kind of a, it will look very odd, styling हम लोग कर सकते हैं बाद में, but अभी के लिए type is going to be submit, and the next thing that I want on this is a value. That means what should be there on the button, and that would be add card. Okay, तो हमने ये बहुत बेसिक सा रेंडरिंग फंक्शन बनाया है, इसको सेव करते हैं. We need to export it to use it somewhere else. Export default. The name should be what we have given it to the class. All right, now if I want to use it as a child component, I need to again import that component as this from ./components add pizza, और उसको सीधा यहाँ पे ऐड कर देते हैं. लेट्स से आई वांट इट आफ्टर माय पिज्जा कंपोनेंट. तो अब तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इज सो वाइटल इन रिएक्ट एंड सो यूजफुल इन रिएक्ट, and we call this add pizza. Okay, let's see how our page looks like. So it is still refreshing. On the right hand side आप देखना एक और component आ जाएगा, because now we have pizza and then we also have another component. It looks very bad, very odd, but एक form दिख रहा है हम लोग को. दिख रहा है आप लोग को नीचे एक form. We have an enter name, enter description. Maybe I'll just reduce the size of the rows. I'll go back, reduce the size of the rows to 2 or 3 maybe. That will work. So I'll make it 4. Okay. So reusability component has worked, come into picture. हमने अलग से एक component बनाया, हमने अलग से एक function बनाया और उसको यहाँ पे लगा दिया. Even though it looks very bad at the moment, but we can start working with this. We can start doing stuff on this. We can start using this form. तो एक काम करते हैं, क्विक काम चलाऊ काम करते हैं, BR लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल BR, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, और लेबल लगा देते हैं इसके लिए. So this one, now you remember I used a for value for labels. You guys remember that labels have for value, so it will have the for value, but it is called for HTML. Okay, so you might have seen that there is a lot of camel casing involved in JSX. It is not HTML, it is JSX, therefore it is being handled differently, and this is for the description. So I'm going to put it right over here and say enter description, और यहाँ इसके बाद भी एक BR लगा देते हैं, so that it looks a little better, not that bad. और यहाँ पे एक heading दे देते हैं, heading 2, please fill the details. Okay, so let's see how this fared well for us. Does it fare well for us? ठीक है, थोड़ा heading आ जाएगा तो दिखने लगेगा. Not that great, but yeah, like still better. मेरे को अभी स्टाइलिंग में उतना नहीं जाना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं, हम फंक्शनैलिटी देख रहे हैं. तो अब हमें क्या करना है? Will this work? This add card will work? I don't think so, because हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक सिंपल फॉर्म बेस्ड कंपोनेंट्स लगा दिए. अब हमें क्या करना है? इस फॉर्म में अगर हम कोई डिटेल्स भरते हैं, I need to capture that detail, basically the name, which will go over here, and the description, which will go over here. Correct? Make sense? So I need to capture that. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
as Shivansh said initially, we need to capture these details. So to capture this detail, I might need a state. So for that, I'm going to create a state, and inside the state, I'm just going to have a name value, empty initially, and a description value, because these are the two things that I need to capture from this form, right? All right, so this makes sense. And at the moment, I need to capture it as and when user types it. तो हमें थोड़ा सा अब इवेंट लगाना पड़ेगा अपने इनपुट बॉक्सेस पे, एंड दैट इवेंट इज गोइंग टू हेल्प मी चेंज दीज स्टेट्स, जैसे हमने डिलीट के लिए किया था कि जैसे ही कोई डिलीट पे क्लिक कर रहा है एक फंक्शन ट्रिगर हो रहा है. सिमिलर टू दैट वी नीड अ ट्रिगर फंक्शन और अ लिसनर और अ हैंडलर, जो भी है टेक्निकल टर्म्स आप लोग देख लोगे, पढ़ लेना. वो हैंडलर फंक्शन हमें चाहिए इस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स पे, ताकि उस हैंडलर फंक्शन पे हम कैप्चर करें और उस हैंडलर फंक्शन से ये दोनों चीजें अपडेट करें, राइट? जिसके अंदर बेसिकली हम दिस डॉट सेट स्टेट यूज करेंगे फॉर नेम एंड डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, so to do that, what I'm going to do is I'm going to attach a on change event to this input box, only this the name वाला input box. And for this I'm going to say this dot, और जो भी हम फंक्शन लिखने वाले हैं, जो भी मेथड से हम ये चेंज कैप्चर करने वाले हैं. सो आई विल से हैंडल change. This is mostly how you will see the naming of the change functions are done. तो अब हमें handle change एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, handle change, and this is going to be an function which will use this dot set state. Now you would be wondering how do I capture this. यहाँ पे क्या नेम के लिए हम कैसे, हमें बस नेम ऐड करना है, बट कैसे करें, कौन सी वैल्यू देनी है. सो उसके लिए what we will be doing is we will be using something that these events gives us, that is the event thing. So whenever we attach any event listener, so this is the listener. So what this is saying is कोई भी change हो, even if I'm typing backspace space enter, whatever I'm doing in this input box, trigger this function, basically this function. So it goes over here and it sees that okay, this dot set state. So how do I capture the value of this? So I do capture the value of this by using the event parameter that I receive. So every event that is getting triggered will pass this event object, and I can show you what is this. So I'll console.log e. Event नाम दे सकते हो, e नाम दे सकते हो, but stick to e or event. Okay. All right. So let's go back. I removed it. Let's refresh. Am I missing something? Okay, I have triggered this state. What does it say? Parsing unexpected token. क्या हमने सब सही से अच्छे से बंद किया है? State is closed, handle change is closed. Looks like it should have worked. Wait, it is. Why is it picking this dot set state? I haven't even defined it. बताओ तुम लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? इसको हटा ही देते अभी के लिए. On change, this dot handle change, ठीक है? It will hit over here, and I am trying to capture this. Okay, it works now. पता नहीं comment से वो pick up कर रहा था for some strange reason. Okay, so how do I understand that this is working? तो मैंने console.log statement लगाया. I'll go inside console.log statement. Provided a value prop to a form field with an on change handler.
this will render a read-only field. If the field should be mutable, use the default value, otherwise set on change or read only. ठीक है, I'm not concerned with that. It is just saying कि आपका जो handler function है उसमें कुछ हो नहीं रहा है. So I will type something, and once I type, do you see something getting triggered on the right hand side? And what is that? That is the event object of React. Similar to JavaScript का event object, but React ने अपना भी events create किए हुए, which is on top of JavaScript का events, and these are called synthetic events, and these have some values. Okay, इसमें एक property का value है target. तो target का मतलब क्या है कि ये event कहाँ trigger हो रहा है. आप देख रहे हो, event hash name, sorry, input hash name. What does this mean? Where is it getting triggered? At some input box which has an ID of name. Correct, right? Timestamp भी है कि कब हुआ, type भी है, change, react name क्या है उसका, on change. तो ये react का synthetic event बोलते हैं. So अगर आप कभी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो या बोल रहे हो and someone asks you कि do you know how react events work, you can say that React has created its own synthetic events on top of the JavaScript event, which gives us the same functionality with the added compatibility with the framework. अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, बट यहाँ पे हम समझने के लिए आए, तो हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें इवेंट है और मेरे को टारगेट से मतलब है, और इस टारगेट के अंदर मेरे को कुछ काम की चीजें दिख रही हैं, एंड द टारगेट के अंदर कुछ काम की चीजें ऐसी हैं, आईडी है एक, और दूसरा है वैल्यू. वैल्यू चाहिए मेरे को इसमें कि इसमें मैंने जो लिखा है उसका वैल्यू है क्या, और वो मेरे को दिखा नहीं अभी तक, बट इट शुड बी देयर. event.target.value. किसी को दिखेगा तो बताना. Yes, obviously it will be after O, but वो दिखा नहीं मेरे को. There are more. Okay. Yeah. There you go. So there is value and it says H. Correct? It says H. That means it is able to capture whatever is written over here. So I can use this, right? I can use this particular thing. So I'll go back and say, give me e.target dot value. ठीक है, e.target.value. तो इससे क्या होगा कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो मैं कैप्चर कर पाऊंगा. तो अब जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा वैल्यूज ओवर हियर, it is changed over here. Let me just start typing something. I will say HAPPY. What do you see? What is getting printed? The value that I am printing. So this makes sense. Like this looks like, okay, I can actually use the stuff for my अपडेशन. अब मैंने नाम लिख दिया, सेम चीज डिस्क्रिप्शन के लिए भी करेंगे, लेकिन अभी इसमें कोई इवेंट नहीं टारगेट किया हमने. सो हैप्पी पिज़्ज़ाज ऑन योर डोर स्टेप्स, ऐसा कुछ करते हैं. इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े मेरे को. ओके, सो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन बट इट इज नॉट ट्रिगरिंग एनी काइंड ऑफ इवेंट, सो आई नीड टू ऐड दैट इवेंट. सो सिमिलरली टेक्स्ट एरिया में भी ऑन चेंज इवेंट लिखेंगे, बट यहाँ पे okay, before I do that, what I can do is I can go ahead and say this dot set state. I can set the state of whatever value is coming. तो हम लोग name को बोलेंगे कि I'm going to set only name, so I will just choose name and say e dot target dot value. So every time I am typing something, the state is getting rendered and state is getting changed. यहाँ तक समझ में आया? I hope this makes sense. Any doubt till here? Anyone? Any doubt till here? All right, good question. What do you think if I remove this dot set state? या उससे पहले, this से पहले
अगर मैं इसको फंक्शन की तरह चेंज कर दूं, आई विल से फंक्शन हैंडल चेंज, और इसको एरो फंक्शन हटा दूं, क्या होगा? या फंक्शन कीवर्ड ही हटा दो अभी के लिए, क्योंकि रिएक्ट डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन कीवर्ड। ऐसे लिख दूं, ये एरो से हटा दिया। अभी दिस का वैल्यू क्या होगा? This goes back to the logic when we were discussing about this keyword, class keyword, and how arrow function works. And at that moment, I said we are going to use a lot of arrow functions in React. So this on change is being triggered from here, correct? This is getting triggered from here. So this render is a part of add pizza class. And add pizza class का value है handle change. ठीक है? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे दिस का कॉन्टेक्स्ट या ये ऐड पिज्जा का स्टेट हमको एक्सेस करना है। दिस डॉट सेट स्टेट क्या करता है? इसको एक्सेस देता है, राइट? दिस बेसिकली गिव्स मी एन एक्सेस टू दिस एंड आई कैन यूज द वैल्यूज इनसाइड दिस स्टेट. सो it goes on and says that okay, I am accessing this dot set state, basically the context of this class. But when I use non arrow function, from here this thing does not get passed, like it does not passes the context of add pizza. And you will see the problem if I use this function and go back. So it looks like this is working. Let me refresh this page. ठीक है? अब React does not recognize the for HTML from the DOM prop. If you intentionally want to appear in the DOM as a custom attribute, all right. Anyway, I don't want this. I will just go ahead and start writing something. What happened? It says cannot read the property of set state of undefined when I change it to normal function. What could be the reason? Anyone? What could be the reason for this? The reason is it is not passing the context. Yes, correct, Bikram. So in the previous versions, what happened is the problem what is happening right now is यहाँ के बाद इसको ये नहीं समझ आ रहा है ये दिस डॉट सेट स्टेट, बेसिकली दिस के अंदर सेट स्टेट उसको मिल नहीं रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब ये एरो फंक्शन नहीं है, ये इसका स्कोप सिर्फ इस एरिया के अंदर है और इस एरिया के अंदर इसको कोई स्टेट नाम की वैल्यू नहीं मिल रही है. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेइंग इट इज अनडिफाइंड. एंड व्हेन आई चेंज इट टू एरो फंक्शन, what I am able to do is I am able to pass the context from where it is being called. So from where is on change is being called? Render function. Render function is a part of this add pizza. Add pizza के अंदर state है, and therefore we are getting the access of this dot set state, and that is the context that is getting passed. Make sense? Correct? Am I correct? Make sense to all of you? Very important concept that how arrow functions are useful. जो विक्रम ने बोला वो भी हम कर सकते हैं. उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत कम यूज किया बाइंड करना. तो बेसिकली बाइंड करने का मतलब ये होता है कि हम उसको इनिशियली डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारे क्लास एलिमेंट्स के अंदर ये वाले फंक्शंस होंगे, तो इनको भी पास कर दो. बेसिकली पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले. और थोड़ा सा बाइंड, कॉल और अप्लाई का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट का. इसमें क्या है, मेरे को पता है कि एरो फंक्शन सब चिल है, सब चीज आराम से करता है, अपने आप कर देगा, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड इसलिए वी यूज अ लॉट, और यू विल सी मी यूजिंग एरो फंक्शंस. आई एम
I'm very lazy like that, and I like to work with minimum complicated things and maximum output. And this is one such example. And arrow functions is, that's why it is very beautiful thing. Okay, so now this is working. तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी, this dot set state की. Now it should work. Let me refresh. Okay. I think मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, इसको हटा दूंगा. So if I try typing happy now, and this is working fine. And अगर मैं state check करूँ तो मेरे को components के अंदर जाना पड़ेगा. And if I go in add pizza state, it is changing. So if I add something happy pizza, so state is also getting captured. Pretty cool. Things are working according to the way I want it to work. Now अब same चीज description के लिए करना है. तो what should we do? Description के लिए क्या करें? क्या यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके description डाल दूं and e dot target dot value कर दूं और ये सेम चीज यहाँ लगा दूं, will this work? Why do you say no, Anam? Tell me, what do you guys think? Take a minute and try to understand what I'm trying to capture. Correct, Nitin. Correct, Anam. I hope most of you will be having this question कि कैसे होगा ये, जब मैं नेम चेंज कर रहा हूँ तब ये नेम चेंज करेगा, लेकिन उस समय डिस्क्रिप्शन नहीं होगा साथ में. जब ये नेम चेंज करेगा या ये चेंज करेंगे हम लोग, दिस डॉट हैंडल चेंज करेंगे, तब नेम नहीं होगा साथ में. तो ये साथ में कैसे करें हम लोग? देयर इज अ ब्रूट फोर्स वे. हम लोग क्या कर सकते हैं, एक का नाम दे सकते हैं हैंडल चेंज नेम और एक का नाम दे सकते हैं हैंडल चेंज डिस्क्रिप्शन. तो इंडिविजुअल फंक्शन काम करने लगेगा उसके लिए, इंडिविजुअल हैंडलर्स आ जाएंगे और वो सारी चीजें अपने आप कैप्चर करेगा और दोनों में अलग अलग डॉट सेट स्टेट की वैल्यू दे देंगे. बट थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हैं. अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन का फायदा देखना आप लोग. हमारे पास ये आईडी है जिसका है नाम नेम और ये आईडी है जिसका है नाम डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमारा स्टेट है नेम एंड डिस्क्रिप्शन विच इज अलाइंड टू द आईडी, और यहाँ पे हम उसको ही अपडेट करना चाहते हैं. तो जो विक्रम ने कोड लिखा है, it takes us back to the object when I said we can also use the square notation with the name. So if I say name this dot state this dot this dot state, अगर name लिखूंगा, so this will give me the name prop. Correct? So अगर मैं id एक्सेस करूं तो उसका आउटपुट नेम होगा. अगर ये वाली id एक्सेस करूं तो उसका आउटपुट डिस्क्रिप्शन होगा. राइट? So what we can do is I'll leave it in as a part of comment and I will say event dot target. उसमें हमने id भी एक प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है. event dot id कैप्चर करेंगे और ये चीज किस चीज के लिए होगा, this will give me these values. e dot target dot id will give me these values, name and description. So it's basically I am trying to get name and description out, and for that I can use this. So this is actually equivalent to saying कि state के अंदर name और state के अंदर का description चाहिए, and this is exactly what it is going to give me. Correct?
Make sense? What we are trying to do? So here, and the value of them will be individual. So if I say this, it is called e.target.id, e.target.id. So जहां पे भी ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, लेट्स से कोई डिस्क्रिप्शन पे ट्रिगर कर रहा है, तो ये डायनामिकली चेंज हो जाएगा, उसकी आईडी को अपडेट करेगा. अगर नेम में चेंज हो रहा है तो ये नेम की आईडी चेंज करेगा, एंड वी कैन चेक इट आउट. So let's save this and see if it works. All right, let's clear this out. Let's refresh this page and see if it works. ये warning यार परेशान कर रहा है, but anyway. So if I say happy, correct, it was happening previously. Happy pizzas. ठीक है, बट मेरे को ये कैसे पता चल रहा है कि मेरा कौन सा स्टेट हो रहा है? काम तो कर रहा है ये. अब चलो स्टेट की वैल्यूज देख लेते हैं अपने कंपोनेंट्स में जाके. And if you see, description has been updated, name has been updated. So let's update happy pizza, and the name gets updated. Happy pizza at your doorstep. Description gets updated. Do you see the dynamic value? Right? Can you see the dynamic values coming into picture? And this has reduced the amount of code that we need. You could have written your own new handler for description separately, new handler for name separately, right? Now comes the second part. That how do I capture these values and how do I add it to this component? How would we do that? We need to capture this value. So I need to add a event to this add card, and that event is going to be the submit event. तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि जब ये सब सारी चीजें हो गई, I can go ahead and add an event on click over here, but then what it will do is it will kind of miss some user aspect. तो ये सिर्फ तभी काम करेगा जब हम क्लिक कर रहे हैं, राइट? तो जब हम क्लिक कर रहे हैं तब ये काम करेगा, बट most of the times we have this tendency of pressing enter when we are submitting something, right? So that will not be triggered by this. तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे फॉर्म पे एक ऑन सबमिट इवेंट लगा देंगे. सो दिस ऑन सबमिट से क्या होगा कि आप एंटर से करो, क्लिक से करो, बटन ये वाला सबमिट बटन दबा के करो, या सिर्फ एंटर मारो, वो सारी चीजें कैप्चर हो जाएगा. और इसमें हम लोग बोलेंगे दिस डॉट हैंडल सबमिट. सो व्हेन आई डू दिस, I need to write this handle submit as well. So handle submit again. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हम तब console.log, let's check the state at the moment. हमें क्या करना है, ये स्टेट वैल्यू जो भी हमने कैप्चर किया है यहाँ पे, उसको वो यहाँ से हम लोग इनिशियली एम्प्टी रखे हैं, and then we are using the set state and sending it. So we need to send these values back to app. तो पहले देख लेते हैं कि ये कैप्चर हो रहा है कि नहीं सबमिट पे. So for that we will go ahead and say console. Let's check out the console. Must be filled with warnings. Remove please. Okay, so I do happy, I do pizza, add door. अब add करते हैं, and what it does is, did you see for a moment it printed something, a kind of a state that we are having, and that is the default behavior of our form, right? कि जब भी कोई सबमिट करता है फॉर्म को, उसको रिफ्रेश करो, because on the top you can see it has sent some values. Name is equal to happy, and value टेक्स्ट एरिया का वैल्यू कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है.
but besides the point, yes. So the default behavior is working, which we do not want. So for that, we would like to stop that behavior, and that is, इस event का behavior क्या है, submit event का behavior क्या है कि वो refresh होता है. So I just want to say event dot prevent default. So when I do this and then say console.log, and let's do that, pizza and press submit. Can you see this particular value printed? And why did it refresh? Did I use the correct naming convention? I did. Let's just, I think वो ठीक से refresh नहीं हुआ होगा. Yeah. Now you see it captures this particular thing. So this captures this object. अब हमारा काम क्या है, इसको वापस भेजना है ऐप में. So for that component में चलते हैं. हमारा डिस्क्रिप्शन और ये क्रिएट हो गया, ये हमने कैप्चर कर दिया. अब इसको हमें भेजना है बेसिकली इस पिज्जा प्लेस में जाके बैठ जाए, और जैसे ही ये पिज्जा प्लेस में बैठ जाएगा तब ऑटोमेटिकली जब हम सेट स्टेट यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली ये डेटा इस पर्टिकुलर फंक्शनल कंपोनेंट को भेजेगा और ये फंक्शनल कंपोनेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. गेटिंग द फ्लो? यस? नो? ऊपर से जा रहा है? ओके, कूल. तो ये करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनी सजेशंस? हमने ऑलरेडी कर लिया है ये काम पहले भी. कैसे भेजते हैं? हाउ डू आई सेंड दिस डेटा टू माई? तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, and I will call this as add card, and this will receive what? Details, right? Details kind of a prop, and that will be used over here. So I will just say console.log details, console.log details, और इस console इसको हमें यहाँ पे as a prop भेजना पड़ेगा. So I will say add card is equal to this dot add card, not this, some weird stuff came in. Add card. So I'm not going to trigger this function over here. I'm just passing the reference, so I will not use the brackets. I'm just passing the reference. Now, once I come to add pizza, since this is a class component, this will automatically receive this. So मैं इसको this dot props दिखाता हूँ, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा. लेट्स फर्स्ट गो बैक बिफोर सेविंग, कि जब भी हम ऐड या पिज्जा लिख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो एक प्रॉप्स करके वैल्यू था जिसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही थी, या ऐड म्यूट करके एक वैल्यू है. अब इसके पास ये ऐड कार्ड आ रहा है क्योंकि हमने ये भेजा हुआ है. इट इज रिसीविंग दिस ऐड कार्ड, करेक्ट. बट ऐप के पास भी सेम प्रॉप्स वैल्यू थी, और पिज्जा के पास तो प्रॉप्स आ ही रहा है, सिर्फ प्रॉप्स आ रहा है, उसमें स्टेट नहीं होता है. तो class based components automatically receive props. Okay, we don't have to specifically go and specify like we did for functional component कि इसको props मिल रहा है. So it is a part of their property class base के लिए. तो आप देख रहे हो अभी इसको एक add card वाला function मिल रहा है. So that's what I'm going to do. I'm going to say जो भी details आ रहा है हमें भेज दो जब हम submit कर रहे हैं. यहाँ पे print कर लेते हैं. तो this dot props, so I have to use this dot props in case of a class based component. Without this it will not understand कि किसका props, क्या props. This is a whole class, तो context इसको मिलना चाहिए कि इस class के props में से
जो आपको props मिल रहा है, which is add card वाला prop, right? I think this is the name. Add cart, और उसको ये values भेजना है. तो अब हमें यहाँ पे वो चीज ट्रिगर कर देनी है. इट्स नॉट लाइक डिलीट फंक्शनैलिटी की हमें वेट करना है. ये सबमिट होने पे ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो हमने वो चीज यहाँ पे हैंडल कर ली है कि जब ये सबमिट होगा तब ये चीज पास कर दो. तो क्या पास करो, दिस डॉट स्टेट वाला पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दो यहाँ से वापस अपने कंपोनेंट पे. सो वी गो हियर, चेक आउट आवर कंसोल, क्लियर इट आउट. क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा था, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स. पिज्जा, हैप्पी पिज्जा, एंड आई एम प्रेसिंग एंटर. ओके, टेक्स्ट एरिया है तो एंटर काम नहीं किया. तो ये दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है? एक तुम्हारा प्रिंट हो रहा है एड पिज्जा डॉट जेएस से, ठीक है, क्योंकि हमने एक उसका सबमिशन पे बोला कि हमें पिज्जा भी दिखाओ, सॉरी स्टेट भी दिखाओ, और उसका प्रॉप्स भी दिखाओ. तो प्रॉप्स में उसने बोला कि एक फंक्शन आ रहा है जो आप यूज कर लो. और जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ, console.log from the app.js is getting triggered. So I have received the data from one component, and I have got it to my parent component, where now I can manipulate that data. Right? Does it make sense what we are trying to do? और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंटर भी कैप्चर हुआ है. ये पिज्जा के बाद में ये एंटर वाला फंक्शन, बिकॉज मैंने एंटर मारा था सबमिट करने के लिए, बट सिंस दिस इज अ टेक्स्ट एरिया इट डजंट वर्क विद एंटर. तो उसने एंटर एज अ कैरेक्टर भी कैप्चर किया है जो उसने भेजा है. ठीक है. So these are the small little things that JavaScript provides us, and that is why it is such a beautiful language. How is it transferring from one to another? Let's check it out. फिर से एक बार कोड फ्लो देखते हैं. हमने क्या किया, हमने बोला हमने यहाँ पे handle change कैप्चर कर लिया. We have handle change, we have handle submit. So what we are trying to do is we are saying that okay, this dot set state needs to get captured over here, and once this get captured over here, once the user is sure that this is what we are going to send, we are going to pass this values to my app.js. And how am I doing it? On the submission of it, first of all, I will stop the default value. I will not let it refresh the page. Then I would go inside the props of this particular class, which is basically one prop that we are sending from app.js. We are sending this particular prop from our main app.js. We are saying that this particular prop is added and it will have this add card, which we have created as a function कि इसमें कुछ details आएंगे तो हम लोग use कर सकते हैं उसको. And that details are nothing but whatever we are submitting from add pizza form. So what I say is, because that becomes a part of this class's prop, and it also expects the value, and the value is what? This dot state. Because once we have set the state over here, we are just directly sending the state. We are not modifying or doing anything. So we don't have to say this dot set state and then send all these details. No, we're just passing the value. We are not using any kind of modification to the values. We are just passing the details. Make sense? Correct. The most recent state will be sent whenever you press enter. तो जिस स्टेट में भी यूजर ने एंटर दबाया वही सारा डिटेल्स app.js पे चला जाएगा. यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे आ गया, डिटेल्स तो आ गए यहाँ तक. अब क्या है, सिमिलर है. जैसे यहाँ पे हमने स्टेट चेंज किया था वैसे यहाँ पे भी स्टेट चेंज कर देंगे. बट इज देयर अ डिस्क्रिपेंसी इन डेटा? Some changes needs to be identified in data. What do you guys think? Is there something that we need to add to this particular app.js?
आई थिंक सो. व्हाट डू यू गाइस थिंक? कुछ ऐसी चीज है जो मिसिंग है इस डेटा में, नेम और डिस्क्रिप्शन से? करेक्ट. आईडी कोड, करेक्ट. फ्लैश कोड एंड विक्रम, सही पकड़ा आप लोगों ने. हमारे पास आईडी नहीं है यार. हमने डेटा तो कैप्चर कर लिया, अब हमें आईडी जनरेट करना है. तो उसको कैसे करते हैं? आईडी जनरेट करने के लिए हमें इस डेटा को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा जो रिसीव हुआ है, और उसके बाद अपडेट करना पड़ेगा. तो अगर मैं बोलूं डिटेल्स डॉट आई डी, नाउ सिंस अभी हम बहुत सारा डेटा एक साथ नहीं भेज रहे. हम लोग कितना डेटा भेज रहे हैं एक बार में? बस ये दो चीज भेज रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एन एरे, दिस इज नॉट an array something like this. We are not sending any array. Correct? So what we need to do is we need to add id to this one at this point of time. Okay, so when we are trying to add an id to this, what we need to do is, this usually happens from database perspective. यहाँ पे क्या होता है कि जब सबमिट हुआ तो डेटा यहाँ से जाएगा डेटाबेस पे, डेटाबेस में सेव होगा तो ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट हो जाएगी, और उसको फिर हम लोग वापस फेच करेंगे app.js पे. तो अभी जो हमने प्रोसेस अपनाया है कि यहाँ से ऐड डेटा को कॉल करते हैं एंड डू दिस, सो यू कैन डू इट टू टाइम्स. either you can get the data over here and send it from your main app or main function, or you can send the data from here to update just the database. ठीक है? अगर हम यहाँ से सेंड करेंगे तो there is a principle कि one kind of component should do only one thing. So since this is capturing the data, this should be responsible for saving the data as well. ठीक है? This is a coding principle which you will get to know as and when you get more experienced. But अभी के लिए to understand React, what we are doing is we are sending the data over here और हम लोग manually ID add कर रहे हैं. But usually this gets added in the database, और उसके बाद जब हम database से ये state करते हैं, if you guys remember, I told you these data comes from the database, not like this most of the times. And that ID will automatically be there. So we might not want to do this. This will be already done in the backend. Anyway, so here I'm going to add something. उस दिन मैंने math.random यूज किया था, तो हम लोग एक रैंडमली डेटा जनरेट करने की कोशिश करें. रैंडम डेटा which should not clash with the data existing IDs that we have. तो हमको 6 से ज्यादा का डेटा चाहिए, right? How do we do that? So for that we will use I think math, उस दिन क्या गड़बड़ हो रही थी, math.random and this value into, I want a value which is above 6. So what I can do is I'll say 6 plus, let's say अभी हम लोग 10 डेटा से ज़्यादा नहीं करने वाले, तो ये क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा. वी कैन डू array length plus 1, कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है करने का, साक्षी. दैट इज ऑल्सो व्हाट वी कैन डू. बट उसके लिए हमें क्या करना होगा कि दिस डॉट पिज्जा प्लेस को एक्सेस करना पड़ेगा. वो भी कर सकते हैं, लाइक मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट. दिस डॉट state dot pizza place plus 1, sorry, dot length plus 1. You can do this. अभी तो हमें randomly बस number generate करना है. So that's okay. I just didn't want to access the whole array again, calculate the length of it. तो मैंने math dot random कर लिया. So if I do this, will this work? First, let me check it. I'll go ahead, console.log, and copy paste this whole stuff.
Let's check if this works. console.log डाला है, हाँ डाला है. लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं. Nope, I have removed that. हाँ, अब ठीक है. Something is not right. Okay, let's remove this. Okay, cool. Let's see if it works. All right, it generates a random data, which is 8 point something. Now let me send it again. I'll change the values. And it gives me a random number. So I can actually 6 plus value दे रहा है, तो 6 0 और into 10 types का value दे रहा है. Cool. So this is working for me. तो mat.random को हम लोग directly detail.id में डाल दें अगर. So what this is going to do is, this is going to update my details with the ID part also. और इसको थोड़ा floor कर देते हैं. What does floor do? Ceiling और floor. Simple case. हाँ, तो अगर 7.896 टाइप का कुछ वैल्यू है तो वो फ्लोर कर देगा, मतलब जमीन की तरफ, तो 7 चला जाएगा. इफ आई यूज mat.seal, seal मतलब सीलिंग towards the top part. So if it is 7.123, so it will go to 8. All right, so I just want a round number. And now let's check the details. Let's clear this out, refresh this page. And enter some value, add card. All right, तो ये डेटा हमने app.js में रिसीव किया पहले, and the ID is 9. It works like I have added the IDs, and this has an ID of 6, right? This has an ID of 6, and it is also picking up some previous IDs because name and description and ID. If I refresh this, that ID will be gone again. And so ID 14. Does it make sense? Like, okay, now this looks like the data that I can update my fields with. So one part is done. We have 6 shouldn't come. Yeah, so I think we should start with 7. क्योंकि कभी कभी ये 0 भी valid आएगा, 0.123, since we are doing math.random. So I will say 7 plus whatever value into 10. So ये number generate करेगा 0 से 10 तक. It can generate a number from 0 to 10, और हम लोग उसमें 7 ऐड कर दे रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो mat.random generate 0 to 1. I'm multiplying it into 10, so there will be 10 different numbers. So if I add 10 values, maybe it will start exhausting. Random numbers will start exhausting after 10 entries, and there will be a repetition. But this is a way of just randomly generating numbers. If you want to add 100 values, you will multiply it by 100, and the IDs will start coming in form of 100. This is basic logic. This is not related to React. Okay. Now I have got the details that I want, which is consistent in data. Now I just need to update this. So what do you think? Should I go ahead and say this dot state dot pizza places dot push and whatever details we have? Should we do this? क्योंकि पिज्जा प्लेस में ही ये वैल्यू घुसानी है, right? This we need to enter inside this array, right? So I would suggest that this is not the right way of doing it.
because we are modifying the pizza place. अगेन पुश से क्या होता है कि वैल्यू लास्ट में एंटर होगी, तो इसी पिज्जा प्लेस में लास्ट में एंटर हो जाएगी, करेक्ट? सो फॉर दैट what we will do is, instead of doing it like this, I will use set state, which we have already seen कि क्यों use करते हैं. I'll say set state not this dot set state, and इसके अंदर हमें पिज्जा प्लेसेस वाला जो वैल्यू है, स्टेट के अंदर जो पिज्जा प्लेसेस वाला वैल्यू है, उसको डिटेल से अपडेट करना है. क्या ये सही रहेगा? Am I being consistent in my data type? अब तो ये इस टाइप की लैंग्वेज समझने लगे होगे आप लोग. You must be able to understand what I'm saying when I say, is it the same data type? Okay, let's say I'm doing this. Is it correct? I am creating an array, correct? But what I'm doing is, पुराना सारा डेटा हटा दिया. पुराना सारा डेटा हटा दिया. हमने क्या बोला कि अब एक नया डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, उसी उतना ही एरर रहेगा. So this should not, like, ये एरर थ्रो करेगा. Do you think this will throw an error to us? I don't think so. 2. Let's go check it out. And let's refresh this. Okay, let's refresh. Remove the warnings, बाद में देखेंगे. And if I add card, what does it do? It removes all the previous data and updates the new card. Now if I delete it, it will work fine and no data is available. But there is still some bug inside this, and that bug seems to be a very major problem, because वो previous data हटा दे रहा है. तो हम लोग एक बहुत क्रेजी ES6 का फीचर यूज करने वाले हैं, and that is called spread operators. Spread operators. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? Spread operators करता क्या है? It will copy the elements from the source. और source can be anything, array, objects, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, array, objects, कुछ भी हो सकता है. तो कैसे यूज करते हैं? एंड वी यूज इट समथिंग लाइक दिस. लेट्स से हमें किसी एरे, नया एरे क्रिएट करना है यूजिंग सम प्रीवियस वैल्यूज. तो हम लोग लिखते हैं डॉट 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 3 dots, which is a spread operator. I'm spreading out inside this array the value of some array, so some old array. ठीक है, ओल्ड array का नाम दे देंगे, और इसमें अगर कोई नई चीज डालना है, लेट्स से आई एम टॉकिंग डिटेल्स दैट. ठीक है, तो दिस इज ऑलरेडी देयर. हमें प्रीवियस डेटा भी कैप्चर करना है. तो हमें यहाँ पे I'll say dot 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 this dot state dot pizza places, ये एरे को. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहले तो ये डेटा कॉपी करो, पहले तो ये डेटा कॉपी करो, और उसके बाद उस जो नया एरे बना है कॉपीड वाला, उसमें ये जो नया डिटेल्स ऐड किए वो भी ऐड कर दो, एंड अपडेट कर दो मेरा विद दिस न्यू एरे. तो हमने जो एग्जिस्टिंग पिज्जा प्लेस का डेटा है उसको भी नहीं छुआ, वो जैसा था वैसा ही रहा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की. हमने बस उसका डेटा स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी किया और एक नया डेटा ऐड कर दिया. एंड दिस इज अ ES6 फीचर. ठीक है, दिस इज अ न्यू ES6 फीचर. Life is becoming much more easier in terms of JavaScript. So let's go and check it out कि क्या ये काम कर रहा है. So happy pizza, इसको बंद करते हैं अभी के लिए. I don't need this. Happy pizza at your doorsteps. And if I add this card, and it works. Obviously space ज़्यादा ले रहा है, तो हमने CSS aspect अब इसका हैंडल नहीं किया, ऑटो हाइट डाली हुई है, तो वो थोड़ा वियर्ड हो रहा है. But this is working, right? This kind of works for me. Now if I say sad pizza,
not at your doorsteps. If I add this, sad pizza is getting added, and it will work seamlessly. If I try to delete any of these pizza, pretty cool, right? The whole functionality of this is working. Does it make sense कि हमने किया क्या, कहाँ से कहाँ ले गए डेटा, कैसे उठाया, कैसे बंद किया, क्या फ्लो है? ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो आएगा. बताओ फ्लैश कोड का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन करेगा? Why is it not correct to use dot push? What is the problem with that? It modifies the actual. Dot push क्या करता है? Actual array को modify करता है. तो हमें actual जब भी हम state set कर रहे हैं उसको हमें modify नहीं करना है, हमें उस state को update करना है. Update का मतलब क्या होता है कि पुराने वैल्यू से हटा के नया वैल्यू देना है. ये नहीं है कि उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही तोड़ मरोड़ कर दिया. इट्स लाइक एक कंपनी में I am working, then I decide to leave. Or let's say if I am working on a company and I want to understand how Python works. I work as a MERN stack developer, but I also want to understand how Python works. So what you are doing is you are enhancing your skill. You are not replacing MERN stack and overriding your Python skills over that. Or what company decides is they say that, okay, at the moment we will shift him to some other project and let's get a Python developer as well. So we are replacing stuff. We are not modifying. ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि MERN stack को delete करो और Python को include करो. So that is how your React works. Like this is how people try to design with a very real world aspects into it. तो कैसा लग रहा है React? प्रैक्टिस करो, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है. लाइक अभी जो हमने जो अभी काम किया है ना आज, वो बेसिकली हमारा लॉजिक पे ज्यादा काम किया है. हमने सिर्फ लॉजिक पे काम किया आज ज्यादा. रिएक्ट की फंक्शनैलिटीज तो वही सारी यूज की है जो हमने लास्ट टाइम भी यूज की थी. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो. उसके लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड निकालते हैं टू रीआइटरेट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड. ओके, सो हमारे पास देयर इज 3 components. I'm going to create these 3 components. The first component is the parent component called app.js. Second component is pizza.js. The third component is addPizza.js. Right? Now, this is working to and fro. Not to and fro, this is the wrong arrow. This is receiving data as props. Right? This is receiving data as props. और इसको ये जो data मिल रहा है वो अपने आप कर दे रहा है. There is a to and fro data flow from here. How? That I am having props sent from here, and this is sending me the state. Correct? Okay. So state यहाँ से आ रहा है, props यहाँ से आ रहा है, और इसी props को as a function use कर रहे हैं, तो ये state बन के data वापस भेज रहा है हमें अपने app.js पे. Correct? So how the flow is working is, we have some initial state in app.js which is received as props and it renders it, and this whole pizza component is rendered initially. Now we also have a form which is a class-based component, and this form captures the data and sends it back to this, which updates the state with a new value, and this receives the data of the updated state. Why is
All this happening is because of the set state values. Every time we use a set state, there is a re-render that happens. So set state re-renders the component. तो आप देख रहे होगे, इसका ये मतलब है कि जब भी हम सेट स्टेट किसी भी कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं जो कि केपेबल है सेट स्टेट के, इट इज गोइंग टू री-रेंडर द वैल्यू. मेक सेंस? फ्लो समझ में आया जो अभी तक किया हम लोगों ने? ऑलराइट, आई थिंक दिस इज गुड. I wanted to start the intro of Node today, but time constraints, so we can't do it today. कल करते हैं Node start. It's time for doubts. Time for doubts. और आज लोग कम क्यों हैं? Why are people not here? Gagandeep, you have a doubt? Unmute पर है वो. बहुत देर से है क्या? How to remember syntax? इसका तो एक ही solution है, practice. Syntax याद करने की चीज नहीं होती यार, वो automatically आना चाहिए. It should come automatically. ऑलराइट, तो अभी जो आप लोग का असाइनमेंट है, उस पर प्रैक्टिस करो. जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो. टेक दिस कॉन्सेप्ट्स, ट्राई टू इम्प्लीमेंट समथिंग ऑन योर ओन, थिंक ऑफ समथिंग ऑन योर ओन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. And I hope you get better at React, and I see a lot of good React developers because the world needs them, right? All right, so it's time for doubts. If you do not have a doubt, you are free to go, and I will meet you tomorrow at the same time. So have a good day, whoever doesn't have a doubt. Those who have a doubt can stay, talk to me. Otherwise, we will also take leave if there are no doubts. So go ahead, the stage is open. All those who are leaving right now, bye-bye, take care, and keep learning. And please submit your assignment and on time. Any doubts? Raise of hand. Yes, no भी बता दोगे तो मेरे लिए क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. No. Cool. No doubts.